Hello and welcome to the Literature Capital. This video deals with John Keats' idea of negative capability. This word was coined by John Keats in one of his letters to his brothers in 1817. कीट्स के हिसाब से ये उस एडेप्टेशन के प्रोसेस को कहते हैं जिससे एक आर्टिस्ट तब गुजरता है जब वो अपने आर्ट में ब्यूटी की तलाश कर रहा होता है. सो आर्ट इज अगेंस्ट all rationalities, all practicalities, all reasons, certainties and facts. So Keats जो सेंटेंस यूज करते हैं, जो डेफिनेशन यूज करते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी का, वो ये है कि when a man, or he means an artist, is able to live in mystery, doubts and uncertainties without an irritable reaching after facts and reason. जब भी एक आर्टिस्ट किसी भी इमेजिनेशन में अपने जाता है तो उसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं. एक जो उसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है वो है रियलिटी. इंसान को कंफ्यूजन पसंद नहीं है. इंसान चीजों को समझना चाहता है, एक सर्टेनिटी चाहता है अपने आसपास की चीजों को लेकर के. तो इस कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी ये हमारी एक हैबिट बन के रह जाती है, स्पेशली जब एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को परस्यू कर रहा होता है तो उसे ये सारी चीजें रोकती हैं. रीजन और रैशनैलिटी ये चीजें आपको फिक्स करती हैं एक इंटरप्रिटेशन को लेकर के. जब आप इन चीजों से दूर हट जाते हैं तब द वर्ल्ड ओपन्स अप टू यू. यू आर in a state where you can imagine things in your own way. All your windows get open. और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिसमें आप चीजों को इमेजिन कर सकते हैं. बट एक ही रियलिटी है, एक ही वर्जन है, एक ही इंटरप्रिटेशन है जो आपको इन सारे चीजों से रोकता है. तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जो कीट्स का कहना था वो ये था कि शेक्सपियर में सबसे ज्यादा ये एबिलिटी थी. इस एबिलिटी को करके शेक्सपियर उन सारे किरदारों के ही could get into their heads in a way that he no longer remained William Shakespeare. Like whenever a person writes a character, his own subjectivity stops him from thinking beyond what he has felt or he has experienced in his life. And there is a practicality, there is a reminder of practicality at every turn of imagination ki he is William Shakespeare. The ability of Shakespeare to negate his own self, to get into the head of his characters, to start feeling, to get into the moods of his character, to start feeling what they must be feeling, is the ability that makes a genius. आम writers कितना लिख सकते हैं अपने बारे में? According to their own personality, they can create 2 characters, 3 characters, but जो voluminous writers होते हैं अपने इमेजिनेशन को इतनी दूर तक ले जा सकते हैं कि दे आर इन अ पोजीशन दैट दे कैन इमेजिन द पैशंस, डिजायर्स, लाइफस्टाइल्स, पर्सनैलिटीज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड दिस एबिलिटी मेक्स देम द जीनियस. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? दैट इट परस्यूज आइडियल्स ऑफ ब्यूटी, perfection and sublimity. But what is stopping you? You are stopped by this fear of intellectual confusion. You are stopped by this uncertainty. Philosophical certainty is something that we all crave for in our life. Okay, so with a great poet, the sense of beauty, it overcomes every other consideration, right? And or rather it obliterates all consideration. The pursuit of beauty takes the paramount position, और बाकी जितनी सारी चीजें हैं, everything else takes the back seat. So the author's ability to enter fully and imaginatively into the characters, objects and actions he represents, that is his negative capability. एलियट की भी एक थ्योरी है, impersonality theory. वहां एलियट कुछ ऐसी बातें करते हैं जब वो कहते हैं कि impersonality is that the progress of an artist is the continual self-sacrifice. Right? A writer is good as long as he is able to negate his own personality, his continual extinction of personality. He cannot
afford to write every time from his own personality. So author negates himself. He presents a fully independent character which is far from his own personality, one with all the uncertainty and mutability of a real person, right? नेगेटिव कैपेबिलिटी में जो नेगेटिव शब्द है इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक जो नेगेटिव है उसको आप यू कैन लुक एट इट इन ऑपोजिशन टू पॉजिटिविज्म। Positivism is a belief system in which you go for scientific base of everything that is there in the world. You do not believe on your instinct. You do not see the world through your faith or belief system or introspection. These are not the ways you comprehend the world. The only way to comprehend the world is through reason and logic. इसके अगेंस्ट में जॉन किट्स ये शब्द देते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। पॉजिटिविज्म के जितने अगेंस्ट में आप जाएंगे, द मोर यू आर एबल टू यूज योर इमेजिनेशन, द मोर यू आर एबल टू यूज योर इंट्यूशन, दैट इज योर कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी। एक और तरीका हो सकता है इनके इस कॉन्सेप्ट को समझने का, वो ये है कि बिकॉज Keats used to work at an apothecary, so he was engaged in medicine and chemistry, ये सारी चीज़ें वो पढ़ रहे थे। तो एक साइंटिफिक ये भी एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें नेगेटिव पोल्स उसको कहते हैं विच इज पैसिव and which receives electrons from from positive poles. So writer is like that negative pole जो receives impulses from the world, and he is a very passive, he becomes like a medium through which the world explains itself. So the writer negates his own self and himself becomes a vessel. He only becomes a medium, एक माध्यम बन जाता है राइटर जिसके थ्रू he is able to translate all the emotions that is there in the world, and his own participation in the process, it remains very passive. So these are the two ways through which you can understand negative capability. One in opposition to positivism, it's a philosophy, it's a branch of philosophy, and other is through this scientific action of being a passive and receptacle of all the emotions that is there in the world, right? So this was negative capability. Thank you so much.